हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन का जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है उसका पार्ट भी करवाने जा रहा हूँ। ठीक है जी, बीसी के जो है बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, उसका चैप्टर नंबर 6 कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। गाइस, हर एक फील्ड की अपनी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उसी तरीके से बिजनेस की भी अपनी टर्मिनोलॉजीज हैं। ठीक है, बिजनेस many facts of the same reality, as we know that how a business may be studied from a technical, commercial, economic, social and political perspectives. ठीक है जी, each of these perspectives may be regarded as different windows of the same room, right? For a holistic awareness of the business we need to know about all the windows. हमें उन सब के बारे में समझना ज़रूरी है। तो गाइज, इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी फाइनेंस, स्टॉक, कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड है, वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब सबसे पहले एजेंट। एजेंट क्या होता है? डूइंग सम वर्क, सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ अदर एंड गेट सम फीस इन रिटर्न। Amortize. To amortize is to charge a regular portion of an expenditure over a fixed period of time. Annuity due. An annuity whose payment occur at the beginning of each period. और उसके बाद अगला है एप्रिसिएशन। क्या होता है? एप्रिसिएशन इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। Arbitrage, it is the smallest simultaneous purchase and sale of two identical commodities और इंस्ट्रूमेंट्स। और उसके बाद नेक्स्ट है एसेट्स। एसेट्स तो आपको पता ही है, दो इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन्ड बाय द फर्म। उसमें करंट एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है और इंटेंजिबल एसेट्स है। आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीड टू एक्सप्लेन इट नाउ। ओके, आस्क और ऑफर द lowest price at which the owner is willing to sell his securities. और ऑडिट क्या होता है? ऑडिट इज अ केयरफुल रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू वेरीफाई देयर accuracy. Bad debts are amounts owed to the company that are not going to be paid. Balance sheet, the statement showing details of the assets and the liabilities. And what is bond? Bond is a type of long-term promissory note, can be registered in the owner's name or issued as bearer instrument. राइट गाइस, चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं बुक वैल्यू क्या होती है। बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स recorded in the books of the company's book. Break even point. Point of no profit or loss. Budget is a detailed plan for the future expressed in formal quantitative terms. और बियर्स क्या होते हैं? स्टॉक मार्केट जब स्लो होती है तो उसको बियर बोलते हैं। और बेस प्राइस, द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेडिंग। Basket trading is a facility by which investors are in a position to buy or sell all 30 scrips of the Sensex in the proportion of current weights in the Sensex in one go. Blue chips are large, well established and financially sound companies. और उसके बाद बीटा, it is the instrument of relationship between stock price of any particular stock and movement of whole market. Bid, it is the highest price a buyer is willing to pay for a stock. Broker and brokerage firm are registered securities firms are called broker या brokerage firms. Brokers act as an advisor for purchase and sale of securities. Bulls market, a market in which the stock price is increasing constantly. Business dying, days on which stock market are open. उसके बाद बोनस, a part of the profit to be distributed, उसको क्या बोलेंगे? बोनस। और बुक डिस्क्लोजर क्या है? डेट्स between which a company keep its register to the members closed for uploading prior to priority of dividends or issue of new shares or debentures. और उसके बाद है ब्रोकरेज,
is the commission charged by the broker. The maximum brokerage chargeable is determined by SEBI. और बुल क्या है? बुल इज द वन हु एक्सपेक्ट्स अ राइज इन द प्राइस so that he can later sell it at a higher price. Business risk, the riskness inherent in the firm's operations if it uses, no doubt, ठीक है जी. Buyer, the trading member who has placed the order for the purchase of securities. उसके बाद call option, an option that is given to the investor the right but not obligation to buy a particular stock at a specified price within the specified time period. और उसके बाद क्या बेटा? कैपिटल बजटिंग, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एक्सपेंडिचर ऑन एसेट्स हु कैश फ्लोज आर एक्सपेक्टेड टू एक्सटेंड बियॉन्ड 1 year. उसके बाद कैपिटल गेन यील्ड, द कैपिटल गेन ड्यूरिंग अ गिवन ईयर डिवाइडेड by the beginning price. उसके बाद कैश बजट, a table showing cash flow for a firm over a specified period. Commodities, products used for the commerce that are traded on a separate authorized commodities platform. Convertible securities, a security that can be converted into securities of that issuer or as convertible securities. Consolidation, business combination of two or more entities that occur when the entities transfer all of their net assets to a new entity created for that purpose. उसके बाद defensive stock that provides a constant dividend and stable earning even in the periods of economic downturn. और उसके बाद derivatives, a security whose price is derived from one or more underlying assets. The most common underlying assets include stocks, bonds, commodities, currencies, interest rates and market indexes. और उसके बाद financial instruments is anything that ranges from cash, deed, negotiable instruments or for that money any written and authenticated evidence that shows the existence of the transaction or agreement. ठीक है जी. राइट. उसके बाद hedge is a strategy that is used to minimize the risk of the particular investment and maximize the return of an investment. और उसके बाद income stock, a security which has a solid record of dividend payment and offer the dividend higher than the common stock. और उसके बाद yield, it is the measure of return on investment in terms of the percentage. Stock yield is calculated by dividing the current price of the share by the annual dividend paid by the company for that share. Marketing terminology, advertising campaign, an organization's program of advertising activities over a particular period with specific aims, for example an increase in sale or awareness of a product. गाइज अब मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज में आगे है बेंचमार्किंग. इट इज द प्रोसेस ऑफ comparing the products and services of a business against those of competitors in the market or leading businesses in other markets in order to find the way of proving quality and performance. और उसके बाद ब्रांड इक्विटी है, it refers to the value of brand. Brand equity is based on the extent to which the brand has high brand loyalty, name awareness, perceived quality and strong product associations. Brand equity also includes other intangible assets such as patents, trademarks and channel relationships. Business model. A company's business model is management's storyline for how the strategy will be a money maker. उसके बाद है बिजनेस पोर्टफोलियो, इज द कलेक्शन ऑफ द बिजनेसेस एंड प्रोडक्ट्स दैट मेक अप द बिजनेस. उसके बाद बाइंग बिहेवियर,
concerns the process that buyer go through when deciding whether or not to purchase or goods or services. Buying behavior can be influenced by a variety of external factors and motivations, including marketing activities. Conglomerate diversification, a strategy of growing a firm by acquiring other firms for the investment purposes, usually little or no anticipated synergy with the acquired firm. Consortium is a combination of several companies working together for a particular purpose, for example, in order to buy something or build something. Cross selling, using a customer's buying history to select them for related offers, for example, selling a car alarm and music system to a new car buyers. उसके बाद मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? Dividing consumers into groups based on different consumer characteristics to deliver specially designed advertisements that meet these characteristics are as closely as possible. उसके बाद niche marketing refers to the exploitation of the comparatively small markets segment by businesses that decide to concentrate their efforts. Niche segments exist in nearly all markets. For example, atta noodles for health conscious. Preemptive pricing is a strategy involves setting low price in order to discourage or deter potential new entrants to the suppliers market. उसके बाद price sensitive is the effect of a change in price will have on customers. Price skimming involves charging a relatively high price for a short time where a new innovative or much improved product is launched onto a market. And USP, unique selling proposition, is the customer benefit that no other product can claim. तो गाइस इसी के साथ ये टॉपिक और ये चैप्टर कंप्लीट होता है. मैंने जो कॉमन सी चीज़ें थी उसको नहीं लिखा, जो बिल्कुल नई चीज़ें थी आपके लिए, क्योंकि प्लस टू में मैक्सिमम आपने टर्मिनोलॉजी पढ़ ली हुई है, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड है चाहे मार्केटिंग से रिलेटेड है. तो जो नहीं थी, जो प्लस टू के सिलेबस में नहीं थी, वो मैंने आपको लिख के दी है. बाकी एज इट इज़ ही है, उसके लिए कोई आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपने किसी ना किसी लेवल पर पढ़ी हुई है. जो बिल्कुल नहीं थी आपके लिए मैंने उसी के ये नोट्स बनाए हैं, तो आप भी इसको देख के अपने नोट्स पूरे कर लीजिए और अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए. विशिंग यू गुड लक.